ज्योत से ज्योत सजी, सज गया महाविद्यालय का प्रांगण। यूं ही नहीं हम करते आपको वंदन, शिक्षा की संरचना के लिए आपको कोटि कोटि नमन। सुप्रभात। परम आदरणीय पटना महाधर्म प्रांत के महाधर्मा अध्यक्ष श्रद्धेय सेबेस्टियन कलुपुरा, आदरणीय डॉक्टर सिस्टर एम रीमा एसी, प्रोविंशियल सुपीरियर अपॉस्टोलिक कार्मल नॉर्दर्न प्रोविंस, डॉक्टर सिस्टर नेसा एसी, काउंसलर फॉर फॉर्मेशन अपॉस्टोलिक कार्मल कांग्रीगेशन, सिस्टर लिली डिसूजा एसी, काउंसलर फॉर एजुकेशन अपॉस्टोलिक कार्मल नॉर्दर्न प्रोविंस, डॉक्टर सिस्टर एम तनीषा एसी, सुपीरियर अविला कॉन्वेंट, डॉक्टर सिस्टर एम लिसेरिया एसी, former principal Patna Women's College, Sister M Serena AC, Counselor for Spirituality and Formation, Apostolic Carmel Northern Province, Sister M Radula AC, Counselor for Social Work, Apostolic Carmel Northern Province, Dr. Sister M Rashmi AC, Principal Patna Women's College, अन्य सभी सिस्टर्स, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मीगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं सृष्टि तिवारी और मैं वर्तिका कॉलेज के स्थापना दिवस पर आयोजित इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। अब मैं हमारी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे पटना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष श्रद्धेय सेबेस्टियन कलपुरा, प्रेसिडेंट गवर्निंग बॉडी पटना वुमेन्स कॉलेज के सम्मानार्थ में पौधा अर्पित करें। अब मैं डॉक्टर सिस्टर एम तनीषा एसी, सुपीरियर अविला कॉन्वेंट से अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर सिस्टर एम रीमा एसी, प्रोविंशियल सुपीरियर एपिस्टोलिक कार्मल नॉर्दर्न प्रोविंस को सम्मानित करने हेतु पौधा अर्पित करें। अब मैं डॉक्टर सूफिया फातिमा, वाणिज्य की संकाय अध्यक्ष से आग्रह करती हूँ कि वे डॉक्टर सिस्टर नेसा एसी, काउंसलर फॉर फॉर्मेशन अपॉस्टोलिक कार्मल कांग्रीगेशन को पौधा भेंट करें। अब मैं डॉक्टर अमिता जायसवाल, मानविकी और समाज विज्ञान की संकाय अध्यक्ष से निवेदन करूंगी कि वे सिस्टर लिली डिसूजा एसी, काउंसलर फॉर एजुकेशन एपिस्टोलिक कार्मल नॉर्दर्न प्रोविंस के सम्मान में पौधा समर्पित करें। अब मैं डॉक्टर अपराजिता कृष्णा, विज्ञान की संकाय अध्यक्ष से आग्रह करती हूं कि वे डॉक्टर सिस्टर एम तनीषा एसी, सुपीरियर अविला कॉन्वेंट को पौधा भेंट करें। अब मैं डॉक्टर शोभा श्रीवास्तव, जीव विज्ञान की अध्यक्ष से अनुरोध करती हूं कि वे डॉक्टर सिस्टर एम लिसीरा एसी, फॉर्मर प्रिंसिपल पटना वुमेन्स कॉलेज को पौधा प्रदान करें। इसके अलावा यहाँ पर उपस्थित सिस्टर एम सेरेना एसी, काउंसलर फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड फॉर्मेशन अपॉस्टोलिक कार्मल नॉर्दर्न प्रोविंस एवं सिस्टर एम रदुला एसी, काउंसलर फॉर सोशल वर्क अपॉस्टोलिक कार्मल नॉर्दर्न प्रोविंस का बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार। आपके आने से हम सही मायनों में कृतार्थ हुए। पटना वुमेन्स कॉलेज पटना महाधर्म प्रांत के बिशप बीजे सलिवन एसजे की सोच का फल था। बिशप सलिवन को दृढ़ विश्वास था कि बिहार के उत्थान के लिए यहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। अपने सपने को साकार करने के लिए बिशप ने एपिस्टोलिक कार्मल की सिस्टर्स को बिहार आमंत्रित कर उनसे सहयोग का आग्रह किया। मदर एम जोसेफिन एसी ने यह आमंत्रण स्वीकार किया और 1940 में बिशप के बांकेपुर स्थित निवास में कॉलेज और हॉस्टल की शुरुआत हुई।
1948 में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष तत्कालीन भवन के निर्माण के पश्चात इसमें कक्षाएं प्रारंभ हुई। 1940 से आज तक इस कॉलेज ने हजारों महिलाओं को प्रेरित किया है। पटना विमेंस कॉलेज को नैक द्वारा 2010 में 3.51 एवं 2015 में 3.58 के साथ लगातार 3 चक्रों के लिए ए ग्रेड से मान्यता दी गई है। साल 2018 में पटना विमेंस कॉलेज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को स्नातक के पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला बिहार का पहला कॉलेज बना। साथ ही इंडिया टुडे के कॉलेजेस ऑफ इंडिया सर्वे में हमारा प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया है। पिछले बार के प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए इस साल भी कला के क्षेत्र में पूरे पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज की उपाधि हमारे पटना विमेंस कॉलेज को मिली। वहीं विज्ञान में हम दूसरे स्थान पर रहे। इसी प्रदर्शन को देखते हुए बिहार सरकार ने हमें साल 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला कॉलेज होने की उपाधि भी दी। यकीनन ऐसे ही प्रगतिशील एवं प्रभावशाली शिक्षण संस्थान का सपना बिशप सलिवन ने देखा होगा और उनके बाद आने वाली सभी प्रधानाचार्यों ने इस सपने को साकार करने के लिए अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे भी पटना वुमेन्स कॉलेज एक उत्तम शिक्षण संस्थान के रूप में अपनी छात्राओं को आने वाले उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करता रहेगा। दीप प्रतीक है उत्थान का, शुरुआत का और नितांत अंधेरे से लड़ने वाले प्रकाश का। तो आइए आज का कार्यक्रम शुभारंभ करते हुए हम दीप प्रज्वलित करें और ईश्वर से विश्व कल्याण और हमारे महाविद्यालय के लिए प्रार्थना करें। इस शुभ कार्य के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पटना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष श्रद्धेय सेबेस्टियन कलपुरा, डॉक्टर सिस्टर एम रीमा एसी, डॉक्टर सिस्टर नेसा एसी, सिस्टर लिली डिसूजा एसी, डॉक्टर सिस्टर एम तनीषा एसी और डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी को। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तत्पश्चात मैं आदरणीय पटना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष श्रद्धेय सेबेस्टियन कलपुरा से आग्रह करती हूँ कि वे पटना वुमेन्स कॉलेज के संस्थापक बिशप बीजे सलिवन एसजे की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आप सभी सम्मानित विशिष्ट जनों को धन्यवाद। नृत्य खुद में संगीत, सुर, लय और ताल का एक ऐसा अनूठा समागम है जो हमें खुद में रमाकर उस अलौकिक तत्व से साक्षात्कार करवाती है। इसी नृत्य रूपी साधना से साक्षात्कार करवाने के लिए अब प्रस्तुत है आप सबके समक्ष यह प्रार्थना नृत्य। नमस्ते सतिते जगत काणाया, नमस्ते चिते
सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्राह्मणे व्यापिणे शाश्वताय तू जग का पालनहार तूने रचा ये सुंदर संसार। हे विधाता तू जग का पालनहार तूने रचा ये सुंदर संसार। करते हम आज ये प्रार्थना हमको दे दे बुद्धि प्रेरणा। तेरी आशीष पाकर हम तेरी इच्छा को पूरी करें। गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। से तुझ पे करे ध्यान जीवन के हर दान तुझसे पाए हम। शुद्ध तन से तुझ पे करे ध्यान जीवन के हर दान तुझसे पाए हम। करते हम आज ये प्रार्थना हम में भर दे शक्ति चेतना। तेरी कृपा पाकर हम प्रेम भावना बनाए रखें। शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योतिर्नमस्ते। शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योतिर्नमस्ते। तू जग का पालनहार तूने रचा ये सुंदर संसार। हे विधाता तू जग का पालनहार तूने रचा ये सुंदर संसार। करते हम आज ये प्रार्थना हमको दे दे बुद्धि प्रेरणा। तेरी आशीष पाकर हम तेरी इच्छा को पूरी करें। हे विधाता तू जग का पालनहार तूने रचा ये सुंदर संसार। धन्यवाद। आपके नृत्य ने हम सबको इस योग में लीन कर दिया। भारतीय परंपरा में अतिथि को न केवल देव के समान माना गया है बल्कि अतिथि का स्वागत वाकई हमारी परंपरा का हिस्सा है। इन्हीं अतिथियों का स्वागत करने हेतु प्रस्तुत है आप सबके समक्ष ये मनोरम स्वागत गीत। सानी साग सा पम पद पा गरि ग म ग रि नि सा आ आ
सुस्वागतम् सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम् शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम मन मोतियन की माला गूथे हृदय कमल के फूल खिलाए आ आ आ मन मोतियन की माला गूथे हृदय कमल के फूल खिलाए प्रेम रंग रंगोली सजाए प्रेम रंग रंगोली सजाए मुख चंद्रमाया प्रमोदितम 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 सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम आमंत्रित जो आप पधारे धन्य भाग है आज हमारे आ आ आ आमंत्रित जो आप पधारे धन्य भाग है आज हमारे फूलों से हम राह सजाए फूलों से हम राह सजाए शुभ घड़ी आई सुमंगलम 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 सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम निसा ग ग सा ग म ग म प प म प नि नि प नि सा नि सा सा नि सा सा नि सा सा नि सा आ आ आ धन्यवाद। इस मधुर गीत ने हम सभी की भावनाओं को हमारे मेहमानों के प्रति सहृदय व्यक्त कर दिया। अब मैं हमारी माननीय प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और अपने आशीर्वचनों से सभा का अभिनंदन करें। A very good morning and a warm welcome to one and all to this Founders Day program. We come together in celebration of this Founders Day, a time when we reflect
on our vision, sacrifice, and values that our founders instilled in the very fabric of this institution, which was founded for the education of women in our society. Our founders recognized the importance of humbly acknowledging our dependence on God that made their journey towards founding a college for women in the soil of Bihar fruitful. It has been a tradition down the years to celebrate Founders' Day on 20th August, and that is tomorrow, so we are celebrating it today. The feast of the late Right Reverend Bishop Bernard Sullivan, S.J., who is the founder of this great institution. Right Reverend Sebastian Kalupura, Archbishop of Patna, in his capacity as the Archbishop, becomes the successor of our founder, Bishop B.J. Sullivan. He is also the president of the governing body of Patna Women's College. I thank His Grace Sebastian Kalupura, Archbishop of Patna, for all the support and guidance we receive in all our academic and developmental activities. We look forward to his continued support, guidance, and blessings in all our endeavors. A warm welcome to Dr. Sister Rima, Provincial Superior Apostolic Carmel Northern Province. It is under her direction and guidance that we carry out our mission here. Thank you, Sister, for your support and guidance given to us from time to time. Today I have the special honor to welcome Dr. Sister Nessa, a member of our General Administration Council in Bangalore, who is with us here today. We heartily welcome you, Sister. She is also an alumna of this college. It gives me immense joy to welcome Sister Lily D'Souza to this Founders' Day celebration. Sister Lily D'Souza attends to all educational concerns of the Northern Province. We thank you, Sister, for all your appreciation, encouraging words, and support in all our academic activities. I extend a warm welcome to Sister Tanisha, Superior Avila Convent. In her capacity as Superior of Avila Convent and the Vice Principal of PWC, she has been actively involved in all our undertakings for the growth and development of our college. Thank you, Sister. I warmly welcome Dr. Sister Liseria, our former principal, Sister Serena, the Vice Provincial Superior, Sister Mrudula, Principal Carmel School, Patna, to this Founders' Day program. We are indeed happy and honored to have you with us, dear sisters. I warmly welcome all the faculty members, support staff, students who are present here today. We celebrate Founders' Day in grateful remembrance of our pioneers whose vision and determination to empower the women of Bihar, who sacrificed their comfort, familiar environment, their family and friends, accepted the challenge to embrace the unfamiliar environment to educate the women of our society so as to make them agents of social change. Today we pay our homage to the founder of Patna Women's College, Bishop B.J. Sullivan, S.J. He was a visionary. It was his firm belief that the upliftment of Bihar lay in liberating its women by providing them with opportunities for higher education. This prompted him to invite Mother Josephine, the then Superior General of the Apostolic Carmel, to start a college for the young women of Bihar way back in 1940. We owe much to Mother Josephine, who accepted this invitation to start a college for women in Bihar. The idea that the women should be educated to the same standard
as men was truly revolutionary at that time. It has completed 83 years of its committed service to the society. We celebrate all that we have achieved together and aspire yet again, as success is never final. It is an occasion for all of us to gratefully acknowledge the blessings of the Almighty on this premier institution and all who have been associated with it for the past 83 years. We, under the guidance of our pioneers, able and brilliant leadership of our earlier principals, in our vision of eminent faculty members and dedicated staff, have achieved our dream to a great extent in our vision of empowering women in our society. Today, our college stands tall, making progress in innovation, creativity, leadership, service, and social responsibility. As we celebrate the Founders' Day, we look with pride upon our accomplishments and achievements. We are the premier college, setting a standard that others follow. We have consistently led the way. Not only do we inspire others, we even inspire ourselves. Everyone walks extra many miles without counting the cost when it comes to delivering the best we have. As we, the staff and students, work together for the NAC peer team visit this year, we have been supporting and inspiring one another in our pursuit of achieving our target. There is a fire within each one to achieve our goal. We look with pride and wonder at what we have achieved in the past 8 decades and more, and we look ahead with excitement toward what we will achieve yet. There are so many opportunities, and we shall endeavor to seize them all and ever strive to make our great PwC even greater. As always, I am proud to lead this institution on its continuing progress as we walk this path together to greatness with pride and with passion. Thank you, one and all. Wishing each one of you a happy Founders' Day. Long live PwC. Jai Bihar, Jai PwC. धन्यवाद सिस्टर, आपके शब्दों के लिए मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगी। आपके शब्द हमेशा से ही हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। कली कली मुस्काई जब चली हवा पुरवाई, संसार में प्यारा सा रंग लाया, मन भावन सावन जो आया। नृत्य अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। सावन के उत्साह को अभिव्यक्त करने हेतु प्रस्तुत है आप सबके समक्ष यह लोक नृत्य। आगे सिपाही बन खड़े रहे, नहीं देंगे भूमि कर, वो किसान भी जिद पर अड़े रहे। चंपारण के नीले खेतों में अब स्वर्ण अनाज उगाने का समय था। स्वराज की ओर बढ़ना है, उन महिलाओं का भी दृढ़ निश्चय था। सावन के मेघों से झरता अमृत, वो किसान अपनी धरती सींच रही है। सोना उगाती है जो माटी से, वो भारत का गौरव भी जीत रही है। वीरांगना ऐसी जो समाज की उन्नति अपने कंधों पर रख खींच रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक वो बराबर योगदान दे रही है। अपनी इस प्रस्तुति से हम उन गुमनाम चेहरों को याद करते हैं। आज हम उन सच्चे देशभक्त पुरुष एवं महिला किसानों को सम्मान देने का सूक्ष्म प्रयास करते हैं। खेतवा में सोहे किसान
मकैया लहर लहर मार ताल तलैया हरी हरी पतियन माची बोली मकैया अरे लहरे गगन तरे धान हो लहरे गगन तरे धान हो जब लहरे सीवनवा खेतवा में सोहे किसान हो जब लहरे सीवनवा खेतवा में सोहे किसान हो जब लहरे सीवनवा जबल किसान धरे कनवा पे हरवा बैलन के जोड़ी निहार बदरवा जबल किसान धरे कनवा पे हरवा बैलन के जोड़ी निहार बदरवा घेरी बदरा करे जलदान हो घेरी बदरा करे जलदान हो जब लहरे सीवनवा खेतवा में सोहे किसान हो जब लहरे सीवनवा खेतवा में सोहे किसान हो जब लहरे सीवनवा खेतवा हमार बाटे सोन के चिरैया एहिर किसनवा पे सान बाटे भैया खेतवा हमार बाटे सोन के चिरैया एहिर किसनवा पे सान बाटे भैया अरे इन्हीं से दसवा महान हो सुना इन्हीं से दसवा महान हो जब लहरे सीवनवा खेतवा में सोहे किसान हो जब लहरे सीवनवा खेतवा में सोहे किसान हो जब लहरे सीवनवा खेतवा में सोहे किसान हो जब लहरे सीवनवा धन्यवाद प्रतिभागियों, आपके इस मनमोहक नृत्य ने हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। भारत सही मायनों में अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। चाहे वो चंद्रयान हो या G20 की अध्यक्षता या वापस से विश्व गुरु बनने की नियति, भारत हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हिंदुस्तान की इन सभी उपलब्धियों में नारी शक्ति का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, परंतु इसका उल्लेख बहुत ही कम है। तो इसी विविधता में एकता वाले भारत के भीतर नारी शक्ति का योगदान दिखाते हुए प्रस्तुत है ये विषयगत नृत्य। भारत एक गौरव गाथा, नारी शक्ति भाग्य विधाता। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति। एकता का तात्पर्य एकजुटता से है, एकजुटता का तात्पर्य भारत। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत, जिसकी वैविध्यपूर्ण संस्कृति की तरह ही अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम मिलते हैं। जम्बू द्वीप, भारत खंड,
हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। इन नामों में कभी भूगोल उभर कर आता है तो कभी राष्ट्रीय चेतना और कभी संस्कार। विविधताओं का देश भारत अपनी विभिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। भारत के आंगन में मौसम की मिठास, त्योहारों में रंगों का उत्साह, सुख दुख में नित्य की छाव, लोक नृत्य है भारतीय संस्कृति का आभास। सामा खेला चलली भौजी संग सहेली, सामा खेला चलली भौजी संग सहेली हो भैया जीवा हो जुग जुग जिया हो। सामा खेला चलली भौजी संग सहेली, सामा खेला चलली भौजी संग सहेली हो भैया जीवा हो जुग जुग जिया हो। सामा खेला चलली भौजी संग सहेली। राति दुपरले मयना केसा केसा मरम तुमाक जासिमे काखते बहुवाए मयना मिठा मिठा सेने सुमा जासिमे राति दुपरले मयना केसा केसा मरम तुमाक जासिमे काखते बहुवाए मयना मिठा
छाता धर हे देवरा ऐसन सुंदर साड़ी हमर भीज गेलैना छाता धर हे देवरा ऐसन सुंदर खोपा हमर भीज गेलैना रिमी झिमी पानिया बरस गेलैना रिमी झिमी पानिया बरस गेलैना ऐसन सुंदर खोपा हमर भीज गेलैना छाता धर हे देवरा ऐसन सुंदर साड़ी हमर भीज गेलैना छाता धर हे देवरा ऐसन सुंदर खोपा हमर भीज गेलैना। प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ के लोगों का ज्ञान इतना समृद्ध था कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी देश भारत के कायल थे। विश्व गुरु की पदवी पर भारत का दावा प्राचीन विचारों पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी समूचा विश्व एक परिवार। इस बात को विश्व भर में सबसे पहले बोलने वाले हम ही थे। सब संसार एक हुआ सब संसार वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्। नारी ही सृष्टि का आधार है जिनसे जुड़ा सारा संसार है। महिला सशक्तिकरण का वैश्विक संघर्ष, धार्मिक सहभागिता का सनातन अधिकार स्त्रियों को हर रूप में सबसे पहले भारत के इस बिहार में मिला। त्रेता काल में पति की अनुपस्थिति में सीता जी ने ससुर दशरथ का श्राद्ध किया। महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ने की पहली सामाजिक शिक्षा सीता जी से मिली। हे भगवान बुद्ध, मैं आम्रपाली आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। उठिए देवी, हमने आज तक किसी महिला को दीक्षा नहीं दी है। परंतु मुझे आपसे दीक्षा प्राप्त करनी है। कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दें। अधिष्ठानम। यदि ये चैतन्ये मुहुरेव भावाश्चिदचितः। अपने अभूतपूर्व त्याग से जिनेश्वर महावीर की पहली शिष्या बनी राजकुमारी चंदनबाला। उन्होंने 16 शिष्याओं के साथ गांव-गांव जाकर महिलाओं को शिक्षा दी। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। विभिन्न शिक्षा की नींव महिलाएं हैं। महिलाएं जीवन का आधार है। महिलाओं के लिए शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के द्वारा शिक्षा, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है।
शिक्षा, फिर वह चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक या धार्मिक, शिक्षा की भूमि है हमारा यह भारत। भारत की पुण्य भूमि पर जन्मे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, रामानुज, चरक, सुश्रुत आदि जैसे कई विद्वानों ने संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहराया। योग और आयुर्वेद का जन्म भी भारत से ही हुआ। शोध और ज्ञान को जन्म देने वाली भूमि है बिहार। बिहार की शिक्षा भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रचलित रही है। बिहार का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय संस्कार युक्त और शिक्षा प्रबल था। यहाँ कई देशों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ के पुस्तकालय रत्नासागर, रत्नोतोधी तथा रत्नरंजन की ऊंचाई किसी 9वें मंजिल के बराबर थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 100 से अधिक शिक्षक हजारों छात्रों को शिक्षा देने आते थे। ऐसी महान भूमि पर जन्म लेकर हम सभी भारतीय गौरवान्वित हैं। उन्नीसवीं सदी में भारत ब्रिटिश राज्य के अधीन हुआ। भारतीयों ने नेहरू, गांधी, बोस और अन्यों के नेतृत्व में लड़कर 1947 में भारत को आजादी दिलाई। बिहार स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ब्रिटिश शासन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण से ही शुरू हुआ था। भारत की राजनीति में बिहार राज्य की भूमिका हमेशा से अहम रही है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। विश्व का हर एक कण माला के मोती के सदृश है, जो आपस में जुड़कर विश्व बंधुत्व एवं भाईचारे का निर्माण करता है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसी सोच के साथ विश्व गुरु कहलाने वाले भारत द्वारा G20 देशों का नेतृत्व दुनिया के लिए एक समावेशी, लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण होगा। लगभग 200 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा भारत आज G20 नेतृत्व के दौरान एक स्वतंत्र, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। गाए जा तू राग केसरी, मातरम 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 मातरम। वंदे रग रग में गूंज रहा है भारतम 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 भारतम। है बुलंदी पे ये तिरंगा, जोड़ के रखे हमको गंगा रे। सुन लेना हिंदुस्तान हिंदुस्तान
हर खेलों के मैदानों में दहाड़े, फौज हमारी सबसे आगे, इसमें दुश्मन लाख है पछाड़े। ओ झूठ मिटेगा सच रहेगा, अब ये भारत स्वच्छ रहेगा रे। सुन लेना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है रूह पे तेरे निशान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे इस नृत्य नाटिका ने अपने उन्वान को सही साबित किया है। वाकई में नारी शक्ति भाग्य विधाता है भारत की इस गौरव गाथा में। अब मैं परम आदरणीय पटना महाधर्म प्रांत के महाधर्मा अध्यक्ष श्रद्धेय सेबेस्टियन कलुपुरा को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे कृपया मंच पर आए और अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। Dear Sister Dr. Rima, Provincial of the Apostolic Carmel Congregation of Northern Province, Sister Dr. Rashmi, Principal of Patna Women's College, all the eminent sisters and other personalities present over here, the faculty and the other support staff of the college, dear students, and my dear friends. First of all, I thank the college authorities today, the management, the principal, and the college as a whole for organizing the Patrons' Day every year to remember and express the institution's gratitude to the founder of the college, Bishop Bernard Sullivan, S.J. Also, I express my gratitude and appreciation to the governing board, principal, faculty, the support staff for all that they are to this esteemed college to keep its status as the premier educational institution of Bihar. Thanks to all of you. I again appreciate all the performers on the stage today. Wonderful performance. I appreciate, congratulate all the organizers, coordinators, and the supporters of this event on the stage today. The other day I was thinking, what theme should I choose to talk to you all this morning? Then, seeing the situation in this country, seeing the situation in many families, I am closely in touch with many families, especially in this part of our country. Seeing them all, I thought I should choose a topic relevant to today's life for all of us, to all of us. And I have chosen a topic, work towards peace. Peace and harmony through action, a prerequisite for growth of the person and of the society. When I say these things, you are all in a very positive mood now, after seeing
the performance over here, very positive mood. I don't want to put you into a negative mood at all. But at the same time, dear friends, we should not run away from the reality that we are facing today. So I have chosen this topic today. I will start with a small story written in a book written by Father Tony de Mello, S.J. Father Tony de Mello, S.J. was a spiritual animator, community builder, a psychologist, and a great storyteller. In one of his books, this part I read, a story. Please listen to it. There was a sannyasi living in a village. People used to go to him for receiving his blessings and advices. The villagers took care of his food and his ordinary needs. Suddenly, one day, a lady in the village made an allegation against the Sadhuji, sannyasi. He impregnated her. That was the allegation. The villagers came together, abused him, manhandled him, and asked him to leave the village. He said with a smile, "All right, all right." He went away. After some time, the same lady said that it was not the sannyasi, but someone else in the village was the true culprit. The villagers felt bad about the way they treated the sannyasi. They went in search of him, found out where he was, and asked pardon from him, and requested him to return to the same village. Again, the sannyasi had the same smile on his face and said, "All right, all right." Dear friends, the point is, a person whose conscience is clear, who has no guile in him, an integrated person, always experiences peace and harmony within and remain an agent of peace building. This is precisely what I will be talking to you today. In a warlike conflict situation, at any stage of life, well-being or progress is hampered. Then one longs for a peaceful environment. At this juncture, wise people, like the sannyasi in the story, consciously seek the path that leads to peace and harmony. It is so because peaceful atmosphere is the sine qua non condition to achieve political strength, economic stability, or cultural growth, everything. Our soul yearns for peace. What is peace? Everybody will ask this. In fact, peace is human beings' natural state of being. God wanted us to be in our natural being. It is essentially soul or Atma, which has three inherent dimensions: Sat, Chit, Ananda. That is
True knowledge provides us peace of mind, resulting in unending happiness or bliss. We are peaceful when there is no turmoil within us. The union of Atma with the Paramatma brings this about. And unless we experience peace within, we cannot be happy. Bhagavad Gita clearly states this. At the same time, peace is not just silence. One can remain in silence and yet be not peaceful. Again, peace is neither a passive state nor self-centeredness. In fact, selfishness disturbs peace of mind. The villagers in the story were negatively oriented and targeted the innocent sannyasi. Your mind becomes peaceful when the mind is pure, and your mind becomes pure when you do not think and talk ill of others. Peace also means freedom from anxiety, doing good to others, dedicating yourself to a higher cause, serving others, and so on and so on. Buddha's message to the world was, "Blessed are the peacemakers, for they shall enjoy the earth. Blessed are the peacemakers, for they shall enjoy the earth." Considering fellow beings as our own self gives us an elevated feeling which results in the peace of mind. The sannyasi in the story mentioned at the beginning is an example for the same. Again, a saying by Lao Tzu, a Buddhist monk, goes like this: if you want to establish peace in the world, there also must be peace among and within the nations. If one wants peace in the nation, then there should be peace in the regions of the nation. If one wishes for peace in the cities, then there also must be peace between neighbors. And all this begins with the peace of mind. So peace of mind for every individual is a basic factor to attain sustained, harmonious living. Now, India is a multi-ethnic, multicultural, multi-religious, and multilinguistic country, and the slogan that popularly represents the Indian society for years in past is unity in diversity. Please remember, Indian culture is deeply influenced by Bhagavad Gita. Bhagavad Gita underscores that there is unity among all the living beings and God resides in all. The essence of human nature is divine, which is same in everybody, everything. So, Swami Vivekananda said, "Be at peace. Do not disturb yourself. You never were in bondage. You never were virtuous or sinful. Get rid of these delusions and be at peace." Holy Quran says, mankind is a single nation. That means such a peaceful coexistence is the core of human nature. In the Bible says, "For God is not a God of disorder, but of peace," as in the congregation of God's people.
So, if it is possible, as far as it depends on you, live in peace with everyone. Letter to the Romans, chapter 12, verse 18. How is it possible? You will ask. Again, the Bible says, justice will bring about peace. Justice will bring about peace. Right will produce calm and security. Prophet Isaiah, chapter 32, verse 17. Thus, following the precepts of the holy books and that of the wise men, as our existence blends with that of our brothers and sisters in mutual respect, belonging, and love, God of peace becomes incarnate and is experienced in various forms of growth. This state of human existence leaves us with a taste of harmonious living. What is this? Harmony. While there is a combination of simultaneously sounded musical notes to produce a pleasing effect, we call it harmony. It consists of consistent, orderly, or pleasing arrangement of parts. In a person, thoughts, speech, actions should be in harmony with each other. What you think, so should be your speech. And actions are related to your speech and thoughts. The Indian spirituality wonderfully harmonizes the philosophy of action, devotion, and knowledge. For the attainment of perfection, all the three yogas, that is, karma, action, bhakti, devotion or worship, and jnana, knowledge, must be harmoniously blended. Thus, harmonious existence is the constitutive element of establishment of peace. The fact is that our nation with its multiplicity can be a breeding ground for unity and peace, or opposite too. The Indian spirituality, beautifully expressed in Bhagavad Gita, if righteously understood and acted upon, is a potent tool to bring about global peace and harmony. It teaches oneness, universal outlook, unity, equality, equal-mindedness, and sameness, which, when followed in its right sense, can bring about world solidarity. The different religions can be considered as different roads to the same mountain top, that is, God Himself. The same God is worshipped by all, as all manifestations belong to the Supreme God. If God has given to all of us a clear thinking faculty, it has to be exercised by us to live in peace and harmony. When the source of cosmic tree is only one, it is quite obvious that all religions and their founders emanate from the same God, who is one without a second. That is, there is essential unity of all religions. Please remember, the Indian spirituality teaches us that a better way of living the life is in our own hands, and we are the makers of our own fate. All problems erupt from inside of an individual or society.
and solutions to the problem also with us. If we live listening to our inner voice, we will experience and promote peace and harmony within and in the world. Such a situation is prerequisite for the growth and development of persons as well as that of the society. This can be primarily attained through guideless life, integrity of the conscience. Dear friends, I stop here with a poem from Ram Jethmalani, who died at the age of 95. Sometimes, this is how the poem goes. Sometimes, in the dark of the night, I visit my conscience to see if it is still breathing, for it's dying a slow death. When I pay for a meal in a fancy place, an amount which is perhaps the monthly income of the guard who holds the door open, and quickly shrug away that thought, it dies a little. When I buy vegetables from the vendor, and his son, Chotu, smilingly weighs the potatoes, Chotu, a small child who should be studying at school, I look the other way, it dies a little. When I am decked up in designer dress, a dress that cost a bomb, and I see a woman at the crossing in tatters trying unsuccessfully to save her dignity, and I immediately roll up my windows, and it dies a little. When I buy expensive gifts for my children, on return, I see half-clad children with empty stomach and hungry eyes, selling toys at red light. I try to save my conscience by buying some, yet it dies a little. When my sick maid sends her daughter to work, making her bunk school, I know I should tell her to go back. But I look at the loaded sink and dirty dishes, and I tell myself that is just for a couple of days. It dies a little. When I hear about rape or a murder of a child, I feel sad, yet a little thankful that it's not my child. I cannot look at myself in the mirror. It dies a little. When people fight over caste, creed, and religion, I feel hurt and helpless. I tell myself that my country is going to the dogs. I blame the corrupt politicians, absolving myself of all responsibilities. It dies a little. When my city is choked, breathing is dangerous in the smog-ridden metropolis, I take my car to work daily, not taking the metro, not trying carpool. One car won't make a difference. I think it dies a little. So when, in the dark of the night, I visit my conscience and find it still breathing, I am surprised. For with my own hands, daily, bit by bit, I kill it. I bury it. Thank you very much. God bless you all.
धन्यवाद आर्च बिशप जी, हमारा पद प्रदर्शन करने के लिए। आपके शब्द हमेशा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। अब कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर होते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अंजलि राष्ट्री, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी पटना वुमेन्स कॉलेज को मंच पर बुलाना चाहूंगी। Thank you, Vartika. A very pleasant afternoon to all present in the arena. I, Anjali Rajshri, Joint General Secretary, Student Council 2023, take utmost privilege on this auspicious day to propose the vote of thanks. Every year, Founders' Day is celebrated by us to rejoice and recall those who have contributed to the formation and development of this prestigious institution. On this auspicious day, we remember the contribution of the founder of this educational institution, Bishop B.J. Sullivan S.J., who established the foundation of Patna Women's College, which has turned out to be the first women educational institution of Bihar. We remember Mother M. Josephine A.C. for traveling all the way from Karnataka to Bihar to contribute to the education of women. We remember all the sisters of Apostolic Carmel who have contributed to the prosperity of the institution in a way that it now stands as an epitome of women empowerment. I would like to extend my sincere thanks to Right Reverend Sebastian Kalapura, Archbishop, Patna Archdiocese, respected Dr. Sister M. Dima A.C., Provincial Superior, Apostolic Carmel, Northern Province, Dr. Sister Nessa A.C., Counselor for Formation, Apostolic Carmel Congregation, Sister Lily D'Souza A.C., Counselor for Education, Apostolic Carmel, Northern Province, Dr. Sister M. Tanisha A.C., Superior, Avila Convent, Sister M. Lyceria A.C., former Principal, Patna Women's College, Sister M. Serena A.C., Counselor for Spirituality and Formation, Apostolic Carmel, Northern Province, Sister M. Rindula A.C., Counselor for Social Work, Apostolic Carmel, Northern Province, and Dr. Sister M. Rashmi A.C., Principal, Patna Women's College, for gracing the occasion with their gracious presence. I would like to extend my sincere gratitude to our cultural coordinators, Dr. Sister Celine Krasta A.C., Head Department of History, Ms. Inakshi Debiswas, Coordinator Performing Arts, and Ms. Samiksha Sinha, Assistant Professor, Department of Sociology, for successfully organizing and coordinating the entire event. I would like to deliver a special thanks to the technical team of Patna Women's College for their technical support. I would like to extend my heartfelt gratitude to all the participants, deans, teachers, students, and all those who have contributed to the success of the event. Last but not the least, I would like to extend my heartfelt gratitude to all my fellow Student Council members for dedicatedly working to make this event a grand success. With this, we come to an end of the Founders' Day celebration. Happy Founders' Day and have a great day ahead. Thank you.